Hello, dear students. Today we will solve ISC Board Class 12th Physics 2026 question paper. In last classes, we were solving. We have solved section A part, so we will just continue that series. Now today we will solve section B part, that is 2-mark problem. The first problem was asked like this. You can just see on the screen. Question 2 first part, 4-point charges. Q1 is equal to 17.7 microcoulomb. Q2 is equal to minus 8.85 microcoulomb. Q3 is equal to minus 17.7 microcoulomb. And Q4 is equal to 35.4 microcoulomb are kept as shown in the figure first below. You have to calculate electric flux emanating from the closed surface S. So we will just solve this problem. As we all know, students, electric flux is given by phi E is equal to integral over all surface vector E dot vector ds. And students, according to Gauss law, your electric flux, that is phi E, it is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface. Here this Q enclosed, it is the total charge enclosed by the surface. So now here students, we will calculate total charge enclosed by this surface S. You can just see total charge. अब यहां पे स्टूडेंट्स टोटल चार्ज क्या है सरफेस में? Q1 एंड Q2 है. Q3 एंड Q4 क्या है? दे आर आउटसाइड द सरफेस. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्जेस Q3 एंड Q4 दे विल नॉट कंट्रीब्यूट. ओके, क्योंकि यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है क्लोज सरफेस S से. सो हियर चार्जेस Q1 and Q2 they are enclosed by this closed surface S. So here just we will proceed for the next step. Here, according to Gauss law, your electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the closed surface S. अब यहाँ पे टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? दैट इज टोटल चार्ज enclosed by the closed surface. It is equal to Q1 कितना है? 17.7 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है? 8.85 माइक्रोकूलम. And if you will calculate it, it will come out to be 8.85 microcoulomb. Now students, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E, it is equal to 8.85 into 10 to the power minus 6 coulomb upon 8.854 into 10 to the power minus 12 per न्यूटन. ये पावर -1 है. Here it is -1 per न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर per meter square. So here students, if you will simplify this, it will come out to be 10 to the power 6 न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर. सो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द फिगर 2 गिवन बिलो. जस्ट सी,
अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट आई वी विल यूज किरचॉफ्स लॉ। इस प्रॉब्लम में हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट जो सम ऑफ करंट एंटरिंग इट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। और इनकमिंग करंट को क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन में इनकमिंग करंट को हम साइन जो है पॉजिटिव लेते हैं, और आउटगोइंग करंट का हम साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। यहाँ हम देखो 8A और I ये क्या है? इनकमिंग करंट है। 7A 5A 3A ये क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन हम इसके लिए यूज करेंगे, और इसके लिए 8A एंड I के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, we will proceed for the solution of this second problem, A part. So students, here 8A plus I is equal to minus 7A minus 5A minus 3A. So here it will become minus 15A minus 8A. I is equal to minus 23 ampere. Here A, it is ampere, it is the SI unit of current. तो हमें करंट कितना मिल रहा है? -23 एम्पियर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? स्टेट द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑन विच योर कैलकुलेशन इज बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, हमारा कैलकुलेशन किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दैट इज चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, हेंस करंट इज कंजर्व्ड एट अ जंक्शन। तो ये हमारा जो है कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। नाउ विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या पूछ रहा था? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। You are provided with three identical capacitor, each of capacitance C. If CP is equivalent capacitance when they are connected in parallel, and CS is equivalent capacitance when they are connected in series, you have to calculate the ratio. It is here you have to calculate the ratio CS upon CP. You can just see. You have to calculate the ratio CS upon CP. थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C है। तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में राइट करेंगे, सीरीज में देन राइट करेंगे, फिर क्या करेंगे? CS अपॉन CP को हम जस्ट डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। अगर थ्री इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स होते हैं जिनका कैपेसिटेंस C है, तो हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे राइट करते हैं? CP इक्वल टू C प्लस C प्लस C। तो CP इक्वल टू कितना हो गया? 3C। And if we have three identical capacitors, each of capacitance C, then their equivalent capacitance in series combination is 1 upon CS. It is equal to 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C. तो ये कितना हो गया? It will become 3 upon C. So here, after simplification, CS will become C by 3. Now students, इस प्रॉब्लम हमें क्या कैलकुलेट करना था? CS अपॉन CP। तो CS अपॉन CP इक्वल टू C बाई 3 इंटू CP कितना आया था? इट वॉज 3C, बट ये डिनोमिनेटर में है तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3C।
1 upon p c. तो ये c से c will cancel out. So here we will get 1 upon 9, which is equal to 0.11. So this is the correct answer for this problem. Now next, come to next problem. Question number 4. 4. What is the effect of doubling the current flowing through a metallic wire on drift speed of free electrons, relaxation time of free electrons? So students, as we all know, relationship between current and drift speed of free electrons, it is given by I is equal to N E A V D, where V D is the drift speed of free electrons. So V D is equal to I upon N E A. अब यहाँ पे ये जो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? करंट पे. तो करंट अगर डबल करेंगे हम यहाँ पे करंट, तो क्या होगा? ये फिर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट विल आल्सो गेट डबल. तो ए का आंसर क्या होगा? इट विल बी डबल. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूछ रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, this tau, it is inversely proportional to 1 upon r. ये रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम. एंड वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर. तो r इज इक्वल टू v बाई आई. तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू i अपॉन v. सो रिलैक्सेशन टाइम इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट. तो करंट को डबल करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी डबल. तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए पोटेंशियोमीटर used to compare EMFs of two given cells X and Y. Procedure and formula are not required. So this is very simple and it is also given in the book. We can just see. Now students, next problem, question number 5. In question number 5, they are asking, write an expression of Biot-Savart law in vector form. So students, as we all know that Biot-Savart law in vector form, it is question 5 first. Vector dB is equal to mu naught upon 4 pi I vector dl cross r cap upon r cube. This is Biot-Savart law in vector form. And students, here vector dB is, it is a small magnetic field at a point. Mu naught, as we all know, it is permeability of free space. I is current. Vector dr is infinitesimal current element and it is vector in the direction of current, and r cap is unit vector. So this is Biot-Savart law in vector form. And if you have to calculate whole magnetic field, total magnetic field, तो क्या कर देते हैं हम? सिंपली इंटीग्रेट करते हैं वेक्टर dB. Now come to next, state Ampere's circuital law. So this is also very simple, straightforward definition. Now come to next problem, question number 6. अब ये प्रॉब्लम लिटिल बिट क्या था, थोड़ा बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम था. तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना है. तो जस्ट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. A biconvex lens of focal length f1 placed in air as shown in figure 3a below. The radii of curvature of its first and second surfaces are r and 2r respectively. The lens is cut along the plane CD. Compare the focal length f2 of the resulting lens shown in figure 3b with that of the original lens shown in figure 3a. So we have to compare the focal length f2 of this resulting lens with that of the original lens in figure 3a.
तो स्टूडेंट्स विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, अब डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं राइट की तरफ, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है लेंस में। डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं लेफ्ट की तरफ, उनका साइन कन्वेंशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। डिस्टेंस जो है नेगेटिव हम आ, लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, if center of curvature is on the right, then we take radius of curvature as positive. And students, if center of curvature is on the left, then we take radius of curvature as negative. So these are very important sign convention. You have to just remember this sign convention. It is very helpful for solving your numerical problems in optics. Now students, we will apply this sign convention to our problem. अब स्टूडेंट्स यहां पे विल अप्लाई दिस फॉर फिगर 3A। एज यू कैन सी, अब देखो फर्स्ट सरफेस के लिए, जैसी फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इट इज ऑन द राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव लेंगे। एंड सेकंड सरफेस के लिए स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? लेफ्ट में है सेकंड सरफेस के। दिस इज सेकंड सरफेस, ये this is second surface, and this is center of curvature, and it is on the left. So we will take as radius of curvature of second surface to be negative. And students यहाँ पे R1 जो हो जाएगा वो कितना होगा? R1 जो है यहाँ पे प्लस R होगा, और R2 कितना होगा? इट विल बी -2R। नाउ स्टूडेंट्स वी विल यूज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, R1 कितना था? प्लस R था, और R2 कितना था? -2R था। लेंस मेकर फॉर्मूला वी विल अप्लाई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दैट? 1 अपॉन एफ इक्वल टू n-1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। f क्या है? फोकल लेंथ है। तो स्टूडेंट्स हियर विल अप्लाई this sign convention, that is R1 is equal to plus R, R2 is equal to -2R in this problem. Sorry, in this formula, lens maker formula. So students here 1 upon F will be equal to n-1। R1 क्या था? R था। R2 कितना है? -2R है, तो 1 upon 2R। So here students this will become 1 upon F is equal to n-1, and it will become 3 upon 2R. And if you will further simplify it, it will become F is equal to 2R upon 3 into n-1। और स्टूडेंट्स इसे हम F1 ले लेते हैं, फर्स्ट सरफेस। F1 से डिनोट कर देते हैं। सॉरी, फर्स्ट लेंस के लिए हम F1 ले लेते हैं, इसे हम F1 से डिनोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड लेंस के लिए वी विल कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पे ये जो लेंस है इसको कट किया जा रहा है अलोंग द प्लेन CD। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट सरफेस क्या हो गया? फिर प्लेन हो गया, और सेकंड सरफेस क्या है? कन्वेक्स सरफेस है, कर्व्ड है। तो यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा? R1 जो है यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज ये प्लेन सरफेस है। और R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, सेकंड सरफेस के लिए सेकंड लेंस में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द लेफ्ट, तो यहाँ पे R2 विल बी नेगेटिव।
So here R2 will become minus 2R. तो ये साइन कन्वेंशन हम अपने लेंस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स हियर लेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? 1 अपॉन F2 सेकेंड लेंस के लिए यूज कर रहे हैं. इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 minus 1 upon R2. So here 1 upon F2, it will become n minus 1. R1 क्या है सेकेंड लेंस के लिए? इन्फिनिटी. 1 upon infinity plus 1 upon 2R. R2 is minus 2R. So students here 1 upon F2, it is equal to n minus 1 0 plus 1 upon 2R. So here it will become 1 upon F2 is equal to n minus 1 upon 2R. तो यहाँ पे F2 कितना हो गया? F2 is equal to 2R upon n minus 1. So we have calculated focal length for second lens. अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों लेंस के फोकल लेंथ को क्या करना है? हमें कंपेयर करना था. तो हियर स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे हम दोनों फोकल लेंथ को. वी विल डिवाइड F2 by F1. So here it will become 2R upon n minus 1 into 3 into n minus 1 upon 2R. 2R and 2R will cancel out. N minus 1 and n minus 1 cancel out. So here we will get 3. So here F2 will be equal to 3 times F1. So students, here focal length of second lens is greater than focal length of first lens. So this is the correct solution of this problem. Now we will see next problem, that is question number 7. अब 7 में क्या प्रॉब्लम था, क्या पूछ रहा था? जैसी name the electromagnetic wave that scans the content of the luggage of a traveler during a security check. So students, the correct answer for this problem is X-rays. Why? Because they have high penetrating power and they can pass through soft materials but are absorbed by dense objects like metals. अब सेकंड में क्या पूछ रहा है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर यूवी रेस, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन वैक्यूम. सो स्टूडेंट्स, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, light in vacuum, it will remain same. So this is the correct answer for this. Now come to next question number 8, the last problem of today's class. Friends, the work function for metals M1 and M2, they are 1.9 electron volt and 5.0 electron volt respectively. Perform necessary calculations to find out which metal emits photoelectrons when monochromatic light of wavelength 410 nanometer is incident on them. So students, we will proceed for the solution of this problem. Question number 8. Work function, it is given phi 1, it is 1.9 electron volt, and work function phi 2, it is also given 5.0 electron volt.
It is the work function for metals M1 and M2. We have represented it by phi 1 and phi 2. Now students, energy of photon, it is given by E is equal to h mu. We can write it in terms of wavelength lambda also, hc upon lambda. And here students, thus there is shortcut formula in electron volt, shortcut formula in electron volt, in electron volt, and it is E is equal to 1240 upon wavelength lambda in nanometer. So students, we will just calculate 1240 upon 410, it is in nanometer, and it will come out to be 3.02 electron volt. So students, we have just calculated energy of photon. And students, for metal M1, if we will compare it with the work function of metal M1, this energy is greater than phi 1, and our phi 1 is 1.9 electron volt, and we are getting energy of photon as 3.02 electron volt. So here students, photo electric emission, it will occur for metal M1. And students, if you'll compare it for metal M2, energy is less than work function. So students, photoelectric emission will not occur. Will not occur. Because work function for metal M2, it is 5.0 electron volt. And students, your energy of photon, it is less than work function for metal M2. So photoelectric emission will not occur. So students, this was the solution of today's problem. If you have liked my problem solving technique, then you can like, share, and subscribe my YouTube channel. That's all. Thank you.